5 इकोनॉमिक सर्वे, और इस चैप्टर के 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा ये है दैट दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेप्स दैट इंडिया कैन टेक टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरा फायदा है इट विल गिव यू पॉइंट्स ऑन स्टेप्स दैट इंडिया कैन टेक फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और तीसरा फायदा है व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू मेक इंडिया इंक्लूसिव एंड डेवलप्ड। तो ये तीनों ही चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए क्या स्टेप्स चाहिए, मीडियम टर्म में हमें क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या किया जा सकता है, और सरकार ने क्या किया है अभी तक, ये भी बात हम देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करें। फर्स्ट इज द सर्वे टॉक्स अबाउट द मीडियम टर्म आउटलुक, दैट विकसित भारत के डायरेक्ट बेनिफिट क्या है। तो डायरेक्ट बेनिफिट, क्यों विकसित भारत चाहिए, क्यों डेवलप्ड इंडिया चाहिए। सो द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ विकसित भारत, if you see, is because it enhances the dignity of citizens. We get a more respectful life. People will get food, clothes, shelter, and improving the quality of life. Less crime, better stability. So when you become a developed country, inclusiveness के साथ, you give dignity to your people, and you give a better living standard to your people. Then of course, last decade, India's economy has shown resilience. Why resilience word is used? Because the global situation has not been very friendly. Deglobalization is happening, COVID pandemic happened, war happened, but still Indian economy has more or less remained resilient. We have grown well, we are still growing okay. And the structural reforms since 2014 have put India on a steady growth path. Structural reforms like Insolvency and Bankruptcy Act, Real Estate Regulation Act, Digital Public Infrastructure, physical infrastructure like roads, railways, reforms in Companies Act. So, there are various reforms like these which we can call structural reforms in the last 10 odd years. Again, agricultural sector reforms like PM Matsya Sampada Yojana, infrastructure development program for cattle rearing. These are all certain structural changes we have observed, which is showing India in a good light. Renewable energy development, that's again a structural change we see. What is the future economic position? Now, we all know, we have been talking about it, that India can be the 3rd largest economy in the next 2-3 years. But that is where the point is, that what do we become, and what do we do being the 3rd largest economy in the world? कि ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसका क्या करेंगे, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों हम ये बनना चाहते हैं। That is the basic idea here. Then of course there is sustained growth potential. India has shown a sustained 7% plus economic growth in the last 7-8 years now, consistently, barring the COVID pandemic year. And now the survey says that we have done a lot of supply side reforms. Supply side reforms is input market reforms like labor reforms and all that has been done. Supply side reforms can be electricity sector reforms, like discoms and all, to become more efficient. Subsidy reforms, introducing subsidies which are better targeted. Supply side reforms can also include capital expenditure in road and railways. जो भी रिफॉर्म सप्लाई बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है, वो सप्लाई साइड रिफॉर्म हुआ। तो सर्वे कहता है कि हम पिछले 6-7 साल से, 8 साल से, 10 साल से बहुत सारे सप्लाई साइड रिफॉर्म्स कर चुके हैं, जिससे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई साइड रिफॉर्म्स के ऊपर अब हमें जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो बियॉन्ड सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, एंड नाउ वी हैव टू गो अप फॉर बॉटम अप नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स। बॉटम अप मतलब गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऐसे रिफॉर्म करें जो लास्ट माइल डिलीवरी दे, जो अंत्योदय है वो कर सके, द पर्सन हु इज लेफ्ट बिहाइंड कैन बी टेकन अप, एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स फॉर बैलेंस्ड and inclusive growth. So that is the thing that survey suggests. They have given a 6-pronged strategy for that. To begin with, what was the economic growth, or what has been the economic growth like in the last 30 years? So we started with USD $300 billion in 93. Today we are $3.6 trillion, now almost touching $4 trillion. जबकि रूपी almost 3% से depreciate करता रहा है हर साल,
तब भी हम डॉलर टर्म्स में 12 टाइम्स 13 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं, विच शोज दैट हम रूपी टर्म्स में 39 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर दें तो भी हम लोग कुछ 15-18 टाइम्स के इंक्रीमेंट देख सकते हैं या 12-13 टाइम्स के इंक्रीमेंट देख सकते हैं इन इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ रेट। सो इंडिया हैज इवन इन रियल टर्म्स ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 10 टाइम्स to 12 times in the last 30 odd years is what we can conclude from here. Also that capital utilization has been efficient because हमने बहुत ज्यादा लोन नहीं लिया. The national debt of the country has not increased a lot and still growth rate has been high. So the loan is not based the growth is not based on loan. The growth is based on developing structure, improving capacity to produce, promoting skill development, rural diversification. इन सब पे based है. And per capita income has also increased from 301 odd US dollar to 2,484 और अब हम करीब करीब 2800 US डॉलर के आसपास पहुंच रहे हैं. मैं 24 की बात कर रहा हूं. So by March 24 we are touching almost 2,800 US dollars. Then अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना साइज, पॉपुलेशन, सिविलाइजेशनल एंटिक्विटी इन सब में हमसे कंपेरेबल है. बट इंपॉर्टेंट है दैट चाइना हैज ग्रोन मच फास्टर compared to India, and we will do a discussion on it for this Chinese growth story. And I am planning to bring a regular schedule for you. जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन खत्म करेंगे, मैंने ये प्लान किया है कि अब every 10 days 12 days आपके साथ एक शेड्यूल करूंगा यूट्यूब पे मीटिंग, जिसमें हम कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करेंगे, आपको सिखाएंगे उसके बारे में, डिटेल्स बताएंगे, so that the love for economics can grow among all. Okay. Then of course there is a multipolar world and geopolitical conflict. We are living in that. क्योंकि चाइना की हालत बेटर थी. When China was growing, it was 92, 95, 98, 2000, 2005, 2007. So China was growing much better. China was doing good. But China was doing good and growing much better in a more peaceful world, in a world where Americans were willing to support China, in a world where globalization was hyper, in a world where people were willing to shift investments abroad. And India has a very different trajectory. India has a trajectory where now there is globalization, as economic survey says. There is a challenge of investments not coming in very easily. People are localizing their production techniques. They are also localizing their supply chain. So India has a different situation compared to what China had. So world is now multipolar, which is more complex, and many and significant geopolitical conflicts are expected in the coming decades, and that will be one thing. Far right has risen. Far right goes for protectionism, and survey says that far right has risen as a clash between globalist elites and the localist people, and that will hurt the economic system because there will be conflict in the global management. Then of course there is globalization decline. The globalization peaked around 2009-10, and since then it has been in decline. We have seen that countries have become more and more protectionist. Even India has been forced to go for what is called Atmanirbhar Bharat program. Of course, nobody is saying that we will go back to a pre-91 day, but and globally मैं मीन कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं कि हम प्री-ग्लोबलाइजेशन डेज में जाएंगे, लेकिन अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, बाइफरकेट हो रहे हैं. चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, दे सीम लाइक मेकिंग एन एक्सिस. USA, Western Europe, Latin America, few countries like Argentina and all seem like making another axis. So India will have to chalk its way very carefully. We are friendly to Russians, we are friendly to Americans, so we will have to make sure that we don't tilt on one side, but still we have to look at our own interests. Plus we rely on China a lot. $101 billion का import है इंडिया का चाइना से. आप सोचिए $101 बिलियन की डिपेंडेंस है एक तरह से हमारी चाइना पर. तो इस डिपेंडेंस में क्या क्या आ जाता है? इवन इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, कैंडल्स, इवन द मिरर्स दैट आर सोल्ड इन इंडिया, फर्नीचर, इवन क्लोथ्स, स्टील इनपुट्स, फार्मास्यूटिकल इनपुट्स, इन सब के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं अभी. इस डिपेंडेंसी को कम करना जरूरी है बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑल्सो with an equal evenness. So Atmanirbhar Bharat is that. एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बोलते हैं is Atmanirbhar Bharat like the self-sufficiency program of pre-91, तीन major differences हैं इन दोनों बातों के बीच में. Pre-1991 we practiced import substituting industrialization with an import duty above 150% even in 1991, average import duty. Today the average import duty is 18%, 18. तो 150% का शुल्क लगाते थे हम हमारे आयात पे, अभी हम उसे 18% पे ले आए हैं.
So that kind of a reduction shows that there is no import substitution per se. It's about making India a part of global value chain. Similarly, pre-91, there was nothing called export promotion, export orientation. We didn't go for that. We were inward looking. We didn't go for much exports. Now we go for export promotion. We show it as one of our achievements. We allow people to develop India as a part of supply chain. Third and very important, pre-91, we were closed to FII. We were very reluctant about FDI. Today we are encouraging FDI, we are allowing FII, we have a lot of foreign investments coming into our country. So I think these are three major differences between pre-91 and post-91, today's Atmanirbhar Bharat. तो दोनों को confuse नहीं करना है, लेकिन global situation बदल रहा है, और चूंकि global situation बदल रहा है, so we will have to be careful that we don't end up doing the same errors that we have done in the past. So we will have to make sure we have good renewable energy development, we have good electric vehicles development, we have processing of batteries in India, we have good processing of say semiconductors in India. So these are things, and then the futuristic industries with respect to artificial intelligence and all that India has to package for itself. Then of course, so another thing is that the developed nations are pushing for greenhouse gas emission reductions, but remember there is a historical obligation that they are not fulfilling. तो वो promise तो बहुत करते हैं, पैसे देने का देते नहीं हैं, और चाहते हैं कि developing nations should reduce their output, but India kind of countries will have to balance it. Climate resilience, adaptation, mitigation, plus economic growth and inclusive growth. So they have to be balanced, brought together to make sure we grow in that manner. So developing countries can't do as much sacrifice as what the developed can, but we already see tentacles are rising. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स यूरोपियन यूनियन ने शुरू कर दिया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन मेरा है, मैंने लोगों को लूटा, कॉलोनी बनाकर इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया, शुरू के अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में कोल यूज करके, अब वो कह रहे हैं हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट टैक्स लगाएंगे ताकि हमारी कंपनी को दिक्कत ना हो, लेकिन आपकी कंपनी को फिर सब्सिडी देनी चाहिए दूसरे कंपनीज को दूसरे देश में. और कोपेनहेगन 2009 में कमिट भी किया था डेवलप्ड कंट्रीज ने कि $100 बिलियन पर एनम देंगे, किसी भी साल $40 बिलियन भी नहीं पहुंच पाए. तो ये हमारा एक हिपोक्रेसी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड है जो भी हमें फेस करना है. देन ऑफ कोर्स इंडियाज ग्रोथ एस्पिरेशंस. So India's rise to superpower status faces more challenges than China, जैसा मैं आपको बता रहा था, because of geopolitical tensions, climate concerns and economic hurdles. ये तीन इंडिया के लिए challenges रहेंगे. Geopolitical tensions, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी. The economic hurdles like import restrictions, deglobalization and climate impact that India will have to face. Then so India must acknowledge the changing global terrain. एक बार हमें समझ आ गया हमारी दुनिया आसपास बदल रही है, हम अडेप्ट करें उससे, देन थिंग्स विल बी रिलेटिवली बेटर. सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेक्स्ट 25 इयर्स तक हमें एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को माइंड में रख के ही ग्रो करना होगा. इसीलिए नेट जीरो का स्टेटस, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन, बैटरी व्हीकल्स के प्रमोशन, इन पे ध्यान देना जरूरी होता जा रहा है. दैट इज द बेसिक आइडिया. देन ऑफ कोर्स वाटर स्ट्रेस, दैट इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, air pollution which is reducing living standard, life expectancy कम कर रहा है air pollution, metropolitans के living standard को खराब कर रहा है जहां हमारी economic activity सबसे ज्यादा dense है. तो ये हमारे challenges हैं. Stagnating life expectancy. So India was having a life expectancy of 32 years in 1947. From 32 years we grew to 55 years by 91. तो ये बहुत बड़ा growth नहीं था, लेकिन growth था. 55 से 66 हम पहुंच गए बाय 2011, लेकिन अभी तक 67, 68, 69 के बीच में फंसे हुए हैं. दैट्स stagnating life expectancy. And then of course the country needs to educate its youth, skill its youth to work with emerging technologies. That's a very big challenge that we are going to face. तो broadly क्या बातें हम कर रहे हैं? Interacting with the world, ये बहुत जरूरी है फ्यूचर ग्रोथ के लिए. और इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड कैसे होगा? बाय बीइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन. दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट हुई? कीपिंग क्लाइमेट चेंज इन माइंड. सो देन यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीनर टेक्नोलॉजी, ये अगली चीज है जो दिमाग में रखनी है. और तीसरा क्या हुआ? स्किलिंग
and upgradation of youth. तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है. टू बिगिन विथ सर्वे बोलते हैं, तभी आप ग्रो करते हैं प्रॉपरली. Ekansh, that's a very simplistic deduction that China has been able to grow because of communist and dictatorship. If dictatorship could have led to growth, then Libya should have grown very well. If dictatorship should have led to growth, then Democratic Republic of Congo should have grown very well. North Korea should have grown very well. So I mean, dictatorial, it's a very simplified assumption, कि dictatorship है इसीलिए grow कर गए. नहीं, कारण ग्रो करने का होता है कि आप अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं. इंडिया का चैलेंज डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया का चैलेंज लैक ऑफ डेमोक्रेसी है. हमारी डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक नहीं पहुंच रही अभी भी. इफ डेमोक्रेसी रीचेस द ग्रास रूट, लोकल गवर्नमेंट बिकम मोर एक्टिव, पीपल्स पार्टिसिपेशन विल राइज, एंड देन पॉलिसी कंसिस्टेंसी विल बी मोर यूजुअल, confrontations will be less, execution will be better, government offices will function better because people will be held responsible, then we grow. आप सोचिए, Britain, France, Germany, USA, Sweden, everything country have grown in spite of being democratic and have grown better after becoming democratic. Japan grew lesser when they were dictatorial and better when they became democratic. So democracy is not a challenge. Whether you have enough democracy, whether we have realistic democracy, whether we have educated our people to be an active part of democracy plays a big role. Dictatorship को कभी confound मत करो. Don't forget, China's economic growth is also combined with complete lockdown in COVID where people died. It also is combined with Tiananmen Square where tanks were fired on students. It is also combined with destroying villages. And quite interestingly, for those friends of mine who are socialists, Chinese fired more than 80 million people to 100 million people between 91 to 2001, giving them no social security and fired them from the public sector units and closed the public sector units down and told them, you go find your job, you will get it in the private sector in the South China, but we won't give you that job. Now imagine what will be the plight of people in that case. So we should not look at macro growth always. Sometimes the micro part also वर्क्स. तो ये सिंप्लीफाइड लगता है कि हाँ चाइना डिक्टेटरशिप है तो ग्रो कर गए, शायद हम डिक्टेटर होते तो ग्रो कर जाते, बट ये कोई 1-to-1 रिलेशन है नहीं, ये आप समझ के रखिएगा. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन फर्दर, national security and cyber security is something where India has to be very vigilant. Fiscal resources have to be increased. So this is about increased role of government by improving governance. It's only when government creates security, when government creates law and order, creates protection of property rights, that you can have better returns in any system. Then of course the state capacity has to be increased, because unless state capacity is not increased, you cannot have better land use, you cannot have water supply, you cannot have contract enforcement. So state supply is important, is what survey suggests. Of course, domestic resource generation for growth is important. So since there is geopolitical uncertainty, since there is volatile for FDI flows over the years, we need to depend more on domestic resources. And what can be those domestic resources? Domestic firms given more expertise, output developed better, labor force given better skill, domestic infrastructure being made better, domestic legislation on intellectual property rights, legislation on labor law, legislation on land acquisition act, all that has to be improved. So if we can do all that, domestic resources grow much better. Geopolitical factors limit the scope for external financing. ये एक limit है again, external financing पे आपको एक लिमिट से ज्यादा पैसे बाहर से मिलेंगे नहीं. तो अगेन हमें अपने अंदर तो एक हम बाहर से डेफिसिट नहीं लगा सकते. एक्सटर्नल डेफिसिट हियर मेनली मींस करंट अकाउंट डेफिसिट. तो इसीलिए हमें अपने देश के अंदर के रिसोर्सेज को निकालना होगा, जैसे म्यूचुअल फंड सही है एंड मोबिलाइज सेविंग्स फॉर डोमेस्टिक यूज, पोस्ट ऑफिस बैंक मोबिलाइज सेविंग फॉर डोमेस्टिक यूज, एंड दैट एनहांसेस द पॉसिबिलिटी मच मोर. अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज एंड रिमेंबर
India has huge potential domestically. We have a large population, we have a growing middle class, so savings will come up, plus we will have an aging population later. At the moment we have a young population, so if we can bring up pension funds, insurance companies, banking sector development, small finance banks, micro institutions, savings can be mobilized. Similarly, government can improve its position in the economy, increase the governance structure, and that has the potential to take India even if external sector is not all that friendly. एक बात और समझिएगा, यहाँ सर्वे ये बात नहीं लिखते, लेकिन मैं ये बात मानता हूं, India's share in global exports, commodity exports is 1.8%. तो अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा श्रिंक भी कर रहा है, हमारे पास कैपेसिटी है बढ़ाने की. In services exports, it is 4.3%. So we can still target increasing our exports. We can target attracting investments into India because India has so much of possibility to make profit. We can attract global joint ventures with other companies. So मुझे ऐसा लगता है कि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए तो ये फिर भी ठीक बात है, बट इंडिया के लिए अभी भी काफी स्कोप है फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इवन दो वी मे नॉट हैव हैड दैट मच अमाउंट ऑफ रिसोर्स इंक्लूजन इन द रीसेंट पास्ट. कोविड पैंडेमिक के बाद मामला थोड़ा हिला हुआ है, ये एक अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड स्टेबलाइज थोड़ा बहुत भी करेगा, इंडिया शुड बी वन ऑफ द प्राइम मूवर्स, इज व्हाट इज माय गेस. देन वी से दैट मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक has the following tenets. So one is geo-economic fragmentation and resource nationalism, as we just discussed. Countries don't want to supply their resources. Everybody wants to develop with themselves. So from just in time, this is any source, but timely delivery. वक्त पे पहुंच जाए, सस्ता सामान मिल जाए, ये ग्लोबलाइजेशन का मंत्र था. To just in case. Just in case का मतलब कि अगर कल को कोई ना भी भेजे मुझे सामान, तो मेरे पास इनफ रहना चाहिए खुद को सपोर्ट करने के लिए. So just in time was efficiency, just in case is strategy. That is what one has to distinguish between the two. Then of course there is global trust deficit. Countries are not very trustworthy on each other, so self-reliance is becoming a mantra all over the world. Then integration of climate strategies into development is needed. So we need to make sure emissions are reduced. We need to make sure phytosanitary conditions are met. We need to make sure that we don't produce by polluting the atmosphere. So all that we will have to work upon to assure that nobody challenges us on our cleanliness, nobody challenges us for lack of a particular commodities availability. तो ये तीन बातों का ख्याल रखिए. एक जियो इकोनॉमी फ्रैगमेंट कर गई है, सप्लाई चेन बाइफरकेट कर रहे हैं, तो एक वो चैलेंज होगा जिसे मीट करना है. कैसे मीट करेंगे? अपने लिए घर में कुछ चीजें डेवलप करें, आत्मनिर्भर का वो पर्पस है. दूसरा ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है, हर कंट्री सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रही है, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम कुछ बेसिक चीजें हैं जिनमें हम दूसरों पे डिपेंड ना करें, या अगर हम दूसरों पे कुछ बेसिक्स के लिए डिपेंड कर रहे हैं तो वो भी हम पे करें. और तीसरा क्लाइमेट चेंज एक इंपैक्ट डालेगा ही, तो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है, पब्लिक फाइनेंस को ध्यान में रखना है, और फिर ये कोशिश रखनी है कि मिटिगेशन इफेक्ट्स काम करें, अडेप्टेशन एफर्ट्स काम करें, और ऐसे सिचुएशन में हम ना फंसे दैट कल को क्लाइमेट रेजिलियंस ना रहे हमारे यहाँ, तो ग्रोथ हो भी गया तो बहुत सारा पॉपुलेशन उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा. So this is the basic idea behind that. Then of course technology can make a strategic difference. Artificial intelligence is emerging as a major strategic shift, and India has also started its process, but we are a little late in this and we will need much more training, much more workforce to create these ideas. While technology enhances productivity, एक ये चीज तो है, it poses challenges such as labor market challenge. क्यों? लोग unemployed होंगे. टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्टिविटी इनहेंस करती है, लेकिन लेबर मार्केट को भी चैलेंज करेगी, तो उसके लिए प्रिपरेशन रखना पड़ेगा. साथ में देयर विल बी वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, जो हमें आज भी देखने को मिल रहा है. Entrepreneurship is earning a lot of money, capitalists are earning a lot of money, workers' wage rate is becoming stagnant, and this is a new world we are entering where again capital is becoming scarce with new technology growing, labor is becoming surplus because worker is being displaced by technology, so labor's bargaining power is going down and capital's bargaining power is coming up. तो इसका मतलब क्या करना होगा? एक even world बनाना होगा where workers get their social security, insurance, pension, and capitalists can be taxed a little more because that way
will help in creating that global pool of work. Then we see next limited policy space and trade-offs. This is one. Global crisis के वजह से आप policy space to maneuver things थोड़े कम है हमारे पास. हम overnight चीजें बदल नहीं सकते, तो हमें उसी बीच उसको balance करके चलना पड़ेगा. Then there have been some big ticket reforms, जैसा मैं आपको बता रहा था, Insolvency and Bankruptcy Act and all. The next phase involves proper implementation of these reforms through collaboration with state government. ये सबसे जरूरी है. Central government and state governments have to come together, collaborate with each other to make sure that they make things much better. Then collaborate with private sector. पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ओवर रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए. सो प्राइवेट सेक्टर शुड आल्सो नो देयर रोल एंड ट्राई ग्रोइंग अकॉर्डिंगली. एंड विद सिविल सोसाइटी, take the civil society in confidence, the intellectuals, the people who create values, people who influence the views, इनको भी confidence में लीजिए कि ये कैसे हम growth की तरफ बढ़ रहे हैं. And then only we can have sustainable, balanced and inclusive growth. अब key areas of policy focus क्या होगा? पहला productive employment, क्योंकि growth और inclusion दोनों के लिए जरूरी है. अब यहां जरूरी है कि जो agriculture है employs over 45%, reduce the proportion plus make employment more productive. एम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है. एम्प्लॉयमेंट देना कौन सी बड़ी बात है? 1 लाख लोगों के हाथ में एक एक चम्मच पकड़ा दीजिए और बोलिए फुटबॉल के मैदान में गड्ढा करो, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया. लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट में पैसे क्या मिलेंगे? कुछ भी नहीं. तो वो परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी हो जाती है. एम्प्लॉयमेंट विद डिग्निटी, एम्प्लॉयमेंट विद गुड वर्क पॉसिबिलिटी, that is possible only when you skill people, make them productive and create productive jobs in India, and those productive jobs will come with more labor market reforms, better credit market reforms. That is what you need for those productive jobs in India. That is very important. Limited policy space hai Tushant when you talk about India forced to purchase oil from Russia to make sure we get cheaper oil. So we can't now diversify away from oil much. We will have to remain with that at the moment. Limited policy spaces. We may have not liked America's banning of Russian foreign exchange, but we can't talk much about it because we are limited in that. We can't use rupee as a global currency immediately. We can't immediately shift to a central bank digital currency. That is the limited political policy space in a changing or fast changing world. Then another is services sector employs around 29%, construction employs 13%. You know what is the sorry part? Manufacturing employs only 11%. This has to change in India. Focus on manufacturing, textile, footwear, leather goods, food processing, say toys, furniture. ये लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है. इन पर अगर हम ध्यान दें, एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और ये लोग जो एग्रीकल्चर में स्टकअप हैं यहां ट्रांसफर हो पाएंगे. सो दिस शुड बी द फोकल पॉइंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो कंस्ट्रक्शन जॉब्स आर इनफॉर्मल, लो पेड. मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन हैज बीन स्लो एज आई टोल्ड यू. एंड इन सर्विसेज इंडिया मस्ट क्रिएट 78 लाख नॉन फार्म जॉब्स. एग्रीकल्चर के बाहर ये जॉब क्रिएट करिए तभी होगा. और यही मैं कह रहा था, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए एंड सर्विसेज पे, while improving agricultural productivity. तो ये कहानियां ही आपको सुना रहा था, that we need to focus on organized manufacturing, organized services, and we improve agricultural productivity. This is important. Then of course the demographics are favorable to us also and are challenging to us also. 65% of India's population is under 35, but the challenge is that many lack modern economic skills. ये देना जरूरी है. सिर्फ यूथ के होने से काम नहीं चलेगा, इफेक्टिव एफिशिएंट यूथ बनाना पड़ेगा. सो गुड स्किल्स, गुड वैल्यू सिस्टम, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इज व्हाट वी शुड लुक फॉर. एम्प्लॉयमेंट गैप के बारे में सर्वे बोलता है दैट 51% यूथ इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल. थिंक 48.75% ऑफ यूथ इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयबल. ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, और ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले रहा है. मैं आपको बता रहा हूं, ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले रहा है.
यूथ को भी नहीं पता कि वो अनएम्प्लॉयबल है, उनको लगता है मेरे पास एक कॉलेज की डिग्री है, 12th की डिग्री है, 10th की डिग्री है, बट उस डिग्री में उनको ये सिखाया ही नहीं कि जिससे उनको नौकरी मिल सके, काम के लायक एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सके या किसी जगह पे वर्कफोर्स में ज्वाइन कर सके. सो दिस इज अ बिग एपिडेमिक ग्रोइंग इन इंडिया. वी नीड टू कैटर टू इट राइट नाउ. Then of course we need to develop, the issues include public perception of skilling. Public perception of skilling में क्या है, किसी को कहिए भाई तुम क्यों नहीं शू मार्केटिंग करते हो, तुम क्यों नहीं डिजाइन करते हो हैमर एंड टोंग्स, गुस्सा हो जाएंगे. मैं यही काम करने के लिए जन्म लिया हूं, मैं तो कोई बड़ा काम करूंगा. तो पब्लिक स्किल लोग सोचते हैं अभी भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, टेक्नोलॉजी बीटेक, एमटेक यही काम है. लोग रियलाइज ही नहीं करते कि बहुत तरह की और पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर स्किल लिया जा सकता है बिना नेसेसरी दोज बिग डिग्रीज. तो एक ये चैलेंज है हमारे यहाँ. पब्लिक परसेप्शन ऑफ स्किलिंग इज वेरी डिफरेंट. देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्किल प्रोग्राम्स. कॉलेज एंड इंडस्ट्री दे मस्ट कोऑर्डिनेट टू गिव अ स्किल टुगेदर. अदरवाइज कॉलेज ने कोई पढ़ाई कराया जो इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं. Again, it doesn't create good jobs in the system. Then outdated curricula, that's again a challenge. As I just told you, low apprenticeship rate, internships नहीं मिल रहे लोगों को, तो on the job सीखने की possibility नहीं हो पा रही. And then mismatch between skills and sectoral demand, that is trained as an engineer but not capable to work in a factory, trained as a professor but not capable to teach. Limited mobility between vocational and formal education, जो मैं अभी बोल रहा था, that if you could shift from vocational to formal education, and low female workforce participation, which is actually a challenge in India. Then, so improve the skilling ecosystem, develop coordination, address sectoral mismatches. Agriculture sector के potentials काफी ज्यादा हैं. Crop diversification पे ध्यान दिया जाए, modernizing agricultural practices पे ध्यान दिया जाए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बढ़ाई जाए और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बढ़ाए जाए. सो यू नो स्केलिंग अप प्रोग्राम्स लाइक कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स, से फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम, ऑपरेशन ग्रीन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सबको स्केल अप करने की जरूरत है टू गेट बेटर रिजल्ट फॉर आवरसेल्व्स. देन नेक्स्ट इज एमएसएमईज. इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है. तो अब समझिएगा, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना जरूरी है. अब दूसरी बात आई, एमएसएमई पे ध्यान देना जरूरी है. तो स्किल एंड ट्रेनिंग दीजिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए, एमएसएमई पे बढ़ावा दीजिए. अगेन एमएसएमई कैन आर क्रूशियल फॉर ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, बट उनके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत है ये रेगुलेटरी हर्डल. इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, नॉर्म्स हैं, टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं, that small companies never get big and can never get big because of the high cost involved. आप सोच के देखिए, एक तरफ मेरे जैसे गरीब कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिल जाती है दिल्ली जैसे शहर में, और दूसरी तरफ जो कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस पर ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं. अब ये कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन करेगा? जो छोटा मोटा कारखाना चला रहा है, और छोटा मोटा कारखाना चलाने वाले का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. If I am running a small micro unit, I am manufacturing small things, I will use electricity as an input, you are charging me like a commercial unit, my cost of production rises. Why? Because you are subsidizing your consumers, some of them can be very rich. You are subsidizing large farmers who can be very rich. So this is an anomaly we see in India. Rectifying that is important. Of course, they face financing issues, they face threshold based concessions. अब threshold based concessions का मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमें माइक्रो एंटरप्राइज एक लेवल के ऊपर जाएगा, थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, 1 करोड़ के ऊपर गए माइक्रो नहीं रहेंगे इन्वेस्टमेंट टर्म में, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हुआ माइक्रो नहीं रहेंगे, और जैसे ही माइक्रो नहीं रहेंगे तो बेनिफिट्स गिवन टू माइक्रो खत्म हो जाएगी. तो बहुत सारी कंपनीज माइक्रो के ऊपर जाएंगी ही नहीं. फिर उनको लगता है मैं माइक्रो बनूंगा, स्मॉल बनना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा अभी हुआ नहीं हूं, लेट मी स्टे लिटिल स्मॉल, माइक्रो ही रहूं, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है. सो डिस्करेजेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड एज आई टोल्ड यू, कंप्लायंस इश्यूज, टू मेनी कंप्लायंसेस, रजिस्टर्स टू बी फिल्ड, रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड. एक स्मॉल कंपनी जो 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, 4 लोग मिलकर चला रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. दे नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर एनर्जी इन डूइंग दैट. Then of course the focus has to be in addressing compliance bottlenecks and improving funding access for MSMEs. ये 2 बातें सर्वे कहता है. रूल्स सिंप्लीफाई कीजिए उनके लिए, फंडिंग एक्सेस बढ़ाइए. ग्रीन ट्रांजिशन करना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं बहुत ज्यादा.
दैट एनर्जी सिक्योरिटी को बैलेंस कीजिए विद ग्रिड स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लाइए अपने अंदर, कोल फायर्ड प्लांट्स के ऊपर कम कीजिए डिपेंडेंस, और प्रॉपर पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि इंडिया एक ग्रीन ट्रांजिशन ले सके बाय 2070 बिकमिंग अ नेट जीरो कंट्री। बट उसके लिए 1.4 ट्रिलियन का खर्चा लगेगा यूएस डॉलर्स। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। Then of course, how do you finance that? So we say that 2.5% of India's GDP is required annually for green finance. So how do you finance? You can't finance the old way now. So you can finance by creating sovereign green funds. You can finance by creating it as a part of corporate social responsibility. You can finance by opening up the FPI sector and allowing global green finance to come to India. So that is the way to finance things. Otherwise क्या होता है? क्यों फाइनेंस की जरूरत है? क्योंकि जब आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड सो ऑन, तो जब आप उधर की तरफ जाएंगे तो इनिशियल कॉस्ट्स विल बी वेरी हाई, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट्स, देन जेस्टेशन पीरियड इज वेरी हाई। आज पैसा लगाएंगे आप, 15 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा। जेस्टेशन पीरियड इज द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट। तो आपने आज पैसा लगाया, 15 साल बाद पैसा प्रॉफिट मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर आने में डरता है फिर। And misalignment between investors' expectation and project timelines. Investors को लगता है कि जल्दी रिटर्न्स आएंगे और बहुत ज्यादा नाम मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस अपने होते हैं, दे मे टेक मोर टाइम, टेक्नोलॉजी माइट सी अ डिसरप्टिव चेंज, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन इशू। सो ऑल दैट इज अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ ग्रीन सिस्टम। अब वहां किस बात पे फोकस होना चाहिए? मोबिलाइज डोमेस्टिक कैपिटल, जो मैं सिखा रहा था आपको अभी, मोबिलाइज इंडियन कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल टू हेल्प ऑल ऑफ दैट, हेल्पिंग अस इन अचीविंग ग्रीन इकोनॉमी। चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, इसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं कि हम चाइना से इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं, तो जरूरी है कि हम चाइना को इन्वेस्ट करने दें इंडिया में ताकि कुछ कैपिटल इन्फ्लो आए। बट वो इन्वेस्टमेंट ये सोच के होना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एंटर ना करें, क्योंकि वहां पर हमारे डिफेंस का खतरा हो जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट वी डिस्कस्ड अबाउट चाइना। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन डोमिनेट करता है, वेदर इट इज components of solar panel, whether it is wind turbines, whether it is electric vehicle battery manufacturing. China has a huge dominance on that supply chain, so we will have to rely on China, but gradually India can start giving an alternative by scaling up the process. India has already started that. It may take 10-15 years, but if we go in this direction, we can scale ourselves up and make sure we expand sufficiently well. Then of course there is deepening of corporate bond market that is needed. कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन बैंक से नहीं लेना चाहिए, बैंक के लोन महंगे होते हैं। उससे अच्छा अगर ये बॉन्ड इशू कर पाए और वो बॉन्ड लोग खरीदें तो बॉन्ड का यील्ड 9-10% का देना पड़ेगा, लेकिन बैंक के इंटरेस्ट लोन्स 13-14% से कम नहीं होते। सो कॉर्पोरेट सेक्टर कैन सेव मनी देयर। ऑल्सो बैंक मनी विल देन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड यू नो मुद्रा लोन्स काइंड ऑफ अ थिंग, फार्मिंग लोन्स. Also, that ways more money can be mobilized in the economy by developing an alternative bond market in India. So that is what survey says, that in that case, India has to make sure that India's bond market is scaled up in the same way as Malaysia, Korea or China, at least, if not like USA or Europe. That is what we need to do. And if you have a good corporate bond market, then the long-term funds become easy to achieve. India के corporate fund bond market में lacks depth, that is less participants. बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें बहुत हाईली रेटेड इशूअर्स ही आते हैं, AAA, AA, A+, और इन्वेस्टर बेस कम ही लोग पैसे लगाते हैं. तो जैसे हमने म्यूचुअल फंड सही है शुरू किया, वैसे लोगों को समझाएं कि भाई फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने से अच्छा उतना ही सेफ, ऑलमोस्ट, पूरी तरह नहीं बट ऑलमोस्ट उतना ही सेफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, तो उनको खरीदिए. 8%, 8.5%, 9% ये भी रिटर्न आपको मिल सकता है. या म्यूचुअल फंड्स जो हैं, बॉन्ड मार्केट म्यूचुअल फंड्स, उन्हें प्रमोट किया जाए. देन दीज म्यूचुअल फंड्स विल बाय बॉन्ड्स एंड दैट विल प्रमोट कॉर्पोरेट फंड मार्केट. सो दिस इज अगेन समथिंग वी कैन aspire to go towards. You know, that is the aspect that we can aspire to go towards. Then of course reduce the cost of issuing bonds, fee, SEBI requirements, इनको थोड़ा रेगुलराइज करें और इशू करने के टाइम को कम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट, स्पेशली द बिगर कॉर्पोरेट्स, फील एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट. फाइनेंस का प्रेशर फिर बैंक्स पे और इकोनॉमिक सिस्टम पे थोड़ा कम होगा. देन ऑफ कोर्स देयर इज टैकलिंग इनइक्वालिटी, ये ग्लोबल कंसर्न है.
that India's top 1% holds 6 to 7% of total income, while top 10% holds 33% of total income. और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि टॉप 10% को पता ही नहीं कि वो टॉप 10% है, because India's top 10%, according to the Household Consumption Expenditure Survey data, begins when you start earning something around 90,000 rupees per month. You are in the top 10% of India. But you talk to people earning 90,000 rupees per month, not per capita, 90,000 rupees per month for a family. So that is around, say, for a family of 4, 23,000 per capita. You enter into India's around top 20%. When you are earning 1,30,000 per month, you enter into India's top 15%. At 1,60,000 per month, 2 lakh per month, you are in the top 8 to 10%. At 5 lakh rupees per month, you are top 1%. पर आप सोचिए अगर एक हस्बैंड हैं जो काम कर रहे हैं सरकार में, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वाइफ हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, या वाइस वर्सा, हस्बैंड प्रोफेसर हैं, वाइफ जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी कमाई 5 लाख रुपए की है बराबर मिला के, बट वो खुद को मिडिल क्लास बुलाएंगे, उनको पता ही नहीं वही इंडिया के टॉप 1% है. हमें लगता है कि जो टाटा, बिरला, अंबानी ये टॉप 1% है, ये तो टॉप 0.0001% है. टॉप 1% ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.4 करोड़ पीपल. And these are people who are earning this money. So if we can make them identified, maybe inclusive growth can happen better. Then of course, government focus has to be there. Policies to create jobs, integrate the informal economy into formal sector, and increasing female workforce participation. Tax policy has to be forward. कैपिटल पे ज्यादा टैक्स लगाइए, लेबर पे कम, क्योंकि लेबर की इनकम कम रेट पे बढ़ रही है, कैपिटल की ज्यादा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपिटलिस्ट को स्ट्रॉन्गर बना रहा है लेबर के मुकाबले, तो ये थिंकिंग हमारी अब डेवलप होनी शुरू हो जानी चाहिए. देन ऑफ कोर्स इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द यूथ. पुअर डाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 56.4% ऑफ इंडियाज डिजीज बर्डन, एंड द राइज ऑफ प्रोसेस्ड फूड along with low physical activity has contributed to obesity, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो यहीं से आ रही हैं. सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट हाउ डू वी टैकल दिस हेल्थ क्राइसिस. ओबेसिटी ट्रेंड्स हैव बीन वेरी हाई इन इंडिया. रूरल एरिया में भी ये बढ़ गया, फीमेल्स में भी बढ़ गया, जो पहले कम देखा जाता था, अब देखा जा रहा है. बिहार एक पुअरर स्टेट है, 12% of the females were reporting obesity there. Now 18% report obesity there. 19% males were reporting obesity there. Now 25% report obesity there. So even poorer states we see this challenge coming up. So the focus has to be कि अगर हमें demographic dividend चाहिए, we inform people, balanced diet, nutritious diet, also inform people about diabetes, hypertension kind of disease, obesity, so that people don't fall ill and we get better demographic dividend in future. Okay. Yogeshwar, that's not possible in this lecture to talk to you on Mudra scheme and Udyam correlation, but we will be talking on MSME to you in a separate video. I will definitely bring it for you. Then we talk about growth strategy. कि क्या-क्या growth strategy रहे in the Amrit Kal and trying to make a sustainable long-term reform. So policy foundation has been done. Government's policy reforms are there. Ensure growth up to 2047 bottoms up. 6-pronged strategy to be developed. Boosting private sector investment. Capital formation, intellectual property for job creation in private sector to be boosted. Government will create a favorable environment by removing regulatory impediments, creating a national single window system. ये आज तक अभी 10% को भी कवर नहीं कर रहा, इसे अगर बढ़ाएं तो बहुत मदद मिलेगी. आत्मनिर्भर पैकेजेस दिए जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर को, जैसे पीएम मित्रा स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू जनरेट मनी to create up to 111 lakh crore rupees of infrastructure development in the next 15 years. So these are some targets we are going for to increase investment to 35% of GDP. अभी investment around 32-33% of GDP पे है, target 40% तक लेके जाना होना चाहिए. That we should target taking our fixed investments to 40% of GDP, out of which 30-32% of GDP should be private investment. Then of course MSME contribution to be increased, strengthen them. They contribute 30% of GDP, 45% of manufacturing output, provide jobs to 11 crore people. So emergency credit line guarantee system, MSME self-reliant India fund, CTG SME is also there, that giving credit guarantee funds to MSME, so through it. Then RAMP as a scheme that, again making sure that MSME are making grounds with respect to productivity. RAMP is focusing on that. And then
making assuring better credit and other support for MSME. एक और बात हमें MSME के बारे में ध्यान रखना है, timely payment that they receive back. MSMEs sell to the bigger companies and then bigger companies delay the payment that they would get. So timely payment to MSME is equally important, which we should consider. Proper research and development facility for MSME should be created. Also lab testing so that MSME products can also get ISI mark, AG mark, ISO certificate and at lesser cost is important. तो ये करें तो MSME और बेहतर हो सकता है. Mittelstand जर्मनी में मीडियम स्केल फर्म्स को कहते हैं. तो डीरेगुलेशन करें, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सरकार और एमएसएमई के बीच में डायलॉग्स बनाएं. डीरेगुलेशन करने का मतलब जो बहुत सारे नियम कानून का बंधन है उसे सिंप्लीफाई करें, लिबरलाइज करें. सो इफ वी लिबरलाइज इट दैट विल हेल्प अस क्वाइट अ बिट. देन गिव एमएसएमई फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, industrial corridors in which they can participate, and semiconductor manufacturing, bullet trains. They will catalyze MSME growth because this will enhance reach of the market, this will enhance input demand, this will enhance skill development. So MSME, see, micro आज इंडिया में बहुत ज़्यादा है. Out of 6.2 crore MSME in India, 5.3 crore are micro. But what we need is medium enterprises which can employ 1,000 people, 1,200 people, invest up to 200 crore, 40 crore, 50 crore and have a turnover up to 200 crore. ये उस साइज के एंटरप्राइज होंगे जो इंडिया को चाहिए, टेक्सटाइल में, फुटवेयर में, टॉयज में, फर्नीचर में. तो हम ग्रो करेंगे बेहतर और गांव से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे. लोअर एंड, तो बॉटम्स अप ग्रोथ तब होगा. देन ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट. Otherwise, the talented youth of India is not choosing to be entrepreneur, which I think is something we should look into. Export strategy and foreign collaboration. अब जो मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड है, इसकी शुरुआत हो गई थी इंडिया और जर्मनी के बीच में करीब 10 साल पहले. और ये जर्मनी के साथ मिलकर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स, इनमें इंडिया के भी मीडियम स्केल सेक्टर्स को स्केल अप करना, उसको थोड़ा वाइडन करना, इसकी कोशिश कर रहा है. Again, we need to scale this up, do better. With China plus one strategy, countries will look forward to this. So if the countries have good experience in India, I think we will have good results out of this. Also, as I said, balancing trade relations with China, ensuring national security, and that part of the strategy can be कि India के medium scale industries आगे बढ़ें. तो China पे dependence थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हम low cost production थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे. Then of course addressing agricultural growth impediments, सेक्टर के challenges अपने क्या challenge है, क्योंकि agriculture चाहिए food security के लिए, climate adaptation के लिए, resource sustainability के लिए. Potential in allied sectors हैं horticulture, livestock, food processing. तो जरूरी क्या है, as I was telling you on the previous slide, reimagine agriculture. More agriculture through fisheries, more agriculture through dairy, through forestry, through poultry. Also growing high value crops like horticulture. Also promoting sustainable growth of water intensive crop like rice, sugarcane. Better processing facility to increase the shelf life of crops. Better marketing facility to induce the farmers to go for crop diversification. Better infrastructure of storage, marketing, connectivity to induce farmers to get higher returns and practice high value agriculture. ये चेंजिंग माइंडसेट की जरूरत है एग्रीकल्चर जैसे चीज में. ग्रीन ट्रांजिशन को फाइनेंस करने की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक और क्या हो सकता है, ब्लेंडेड फाइनेंस. ये हम शुरू कर सकते हैं कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करे आफ्टर द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सम ग्रोथ. तो शुरू का ग्रोथ गवर्नमेंट करे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत समझ आएगा वो. जैसे मान लीजिए एक रोड बनना शुरू हुआ, उस रोड को गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट टेक्स द लोन. ये सत्य घटनाओं पे आधारित एग्जांपल दे रहा हूं. सो सपोज वी मेक अ रोड फॉर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट. फॉर दिस रोड गवर्नमेंट टेक्स अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IBRD, on concessional rates. After the road has overcome the challenge of environment, overcome the challenge of gestation, then the government allows the private sector to come in and the private sector can raise finance from the international market, where now the IBRD, World Bank will not be involved. IBRD part, World Bank की दूसरी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, वो गारंटी कर देंगे इस लोन को और लोन प्राइवेट मार्केट से रेज किया जा सकेगा. तो इस तरह से क्या होगा, शुरू में जब खतरा ज्यादा है,
प्रोजेक्ट पे विश्वास कम है तो आप गवर्नमेंट के पैसा लगाइए, मल्टीलैटरल लोन लीजिए वर्ल्ड बैंक जैसे जगह से। जैसे आपने प्रोजेक्ट को एक लेवल पे पहुंचा दिया, आप स्विच कीजिए पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक गारंटर बन सकता है और लोन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एजेंसी से उठा सकता है, और इस तरह से आप ट्रांजिशन बेटर कर सकते हैं। सिमिलरली वेदर इट इज सोवरेन वेल्थ फंड्स, फ्रॉम विच नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड इंडिया में पैसे लगाने को तैयार है, प्रोवाइडेड हम अगेन क्लाइमेट सेंसिटिव हो जाएं। There is a US Saudi Arabia sovereign wealth fund already putting money in India. They have invested money in REIT and InvIT both. Then of course there is private equity. Private sector को अगर हम लोग थोड़ा instigate करें और उनके corporate social responsibility and all का part बनाएं, there can be a development on that. And sector specific institutions can always be developed. For example, particular institutions looking into mitigation on carbon, particular sectors, institutions looking into animal enhancement, population enhancement, particular sectors looking into green coverage enhancement. तो अगर sectoral based करें हम financing, बहुत लोग अपने, जैसे कुछ लोग एनिमल लवर्स होते हैं, वो बॉन्ड्स खरीदने को तैयार हो जाएंगे, कुछ लोग ट्री लवर्स हैं, वो बॉन्ड्स खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोकलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड फंडिंग का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देन ऑफ कोर्स ब्रिजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन गैप विद अ मीडियन एज ऑफ 28, and there is a threat of automation and digitization. India's youth must be equipped to do those new types of job which will be needed. So national policy on skill development and entrepreneurship is there, and new education policy is there to make sure that the gaps are bridged quickly. Industry collaboration is a must. जब तक इंडस्ट्री के लोग नहीं आपको ज्वाइन करेंगे, the youth cannot be trained, और इसमें देखिए इंडस्ट्री का खुद का ही फायदा है। So industry should take its own initiatives. That okay, we will create courses, we will fund courses in the colleges, and those courses can be designed in a manner where we will get the people whom we would need. So if we can do that, we are again in a better shape. इसमें एक challenge आता है इंडिया में, वो challenge आता है that many people still have ideological thoughts where they say university cannot be a place for industrial worker. Okay, then university should be a place for thinkers, but what are we doing to make our students thinkers? Where are we titillating their thoughts? Where are we making sure that they read more than what they have been suggested? तो हम नहीं कर रहे, हम इस आर्ग्यूमेंट के पीछे छिप रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ना तो हम नौकरी लेने लायक बनाएंगे तुम्हें, ना रिसर्च करने लायक। कॉलेज से निकल के जो अमीर बच्चा है वो एमबीए कर सकता है, अमीर बच्चा यूपीएससी की ट्रेनिंग कर सकता है, जो गरीब बच्चा है किसी तरह कॉलेज पास किया वो बेचारा फंस गया फिर। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू चेंज, एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन विल बी नीडेड। And of course build the state capacity, that's very important. Lateral entry, strengthening civil service, and training and accountability. ट्रेन करना, स्पेशली मिडिल लेवल सिविल सर्वेंट जो 20 साल से काम में है, 15 साल से काम में है, वो शायद स्टैग्नेट कर रहे होंगे, तो उन्हें न्यू ट्रेनिंग दे दी, वर्ल्ड से ज्यादा इनकैप्सुलेट करा दिया, ऑन द जॉब इनहेंस कर दिया वर्क को, सो दे विल बिकम अगेन reinvigorated and they can contribute even better. So suppose if I am in the middle level of bureaucracy and if I am given a new training, I am given a new process, I will be able to again contribute much more. Plus bureaucracy works in silos many times. Administrative Reform Commission ने इसको suggest किया था ARC 1 and 2. अब वो silos हटाने का जरूरत बहुत ज़्यादा है. That we remove the silos in which they operate. That again helps comparatively better. So what is the outlook in medium term? India has shown resilience. Government's recovery strategy has addressed in citizens' concern, but it is important that overcoming challenges we look at crucially. So structural reforms have carried us through. Our growth forecast has been upgraded by IMF to 6.8%, and it makes India the fastest growing economy. But it is important India goes for socio-economic progress and inclusive growth. So how do we achieve that? So the chapter says, अब ये 6-pronged strategy आपको दिमाग में रखना है. Promoting organic capital formation in the private sector by deregulation, reducing leverage, creating bond market. If we do that, we have private sector investment growing. Facilitating public-private partnerships for financing the green transition. जैसा मैंने बताया, initial time public sector can take, latter part private sector can take. Then deregulation and improving connectivity for MSMEs. So 1, 2, 3, harnessing agriculture's potential with sustainable policies. So evergreen revolution, growth with inclusion. So that is 4.
aligning education and skill development policies with a focus on outcome. Workers' skill development is very important. That is equally important. As I told you in this today's lecture many times, that unless the workers are not skill developed, we will have our problems. And sixth, enhancing state capacity and capability. सरकार को मजबूत बनाए, सरकार गवर्नमेंट से ज्यादा गवर्नेंस पे ध्यान दे, सरकार के तंत्रों को बढ़िया बनाए, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करें, डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन को अच्छा करें. तो अगर ये 6 काम किए जाएं, वी विल हैव ग्रोथ एंड वी विल हैव बॉटम्स अप ग्रोथ, क्रिएटिंग स्किल, education, inclusion, MSME growth, entrepreneurship, and a future India. So this is what survey says, that January 24 also they had said that government has done certain structural reforms. Now is the time to do the reforms of the process. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas is what survey says has to be done to make a developed India. So they said Sabka Prayas led to Swachh Bharat, Digital India, vocal for local. So if we do this, then India becomes a much more developed system. All right, so this was on this chapter. It's a very important chapter for mains answer writing. जो 6 points हैं और जो chapters में suggested हैं, वो बहुत काम आएंगे आपके लिखने के में. तो यहीं पर इसको रोकता हूं मैं. अगली क्लास में आपसे बात करूंगा on social sector. I will try keeping it a slightly longer class to finish the social sector chapter, or we will do it in 2 classes. But that's again a very important chapter for writing in the civil service exam, both prelims and mains. So I hope to see you soon. Thanks a lot. Bye-bye. All the best. God bless you all.